इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। The Doppler, lot of changes there in the data. Lot of changes in the data. It was towards the end level. Doppler. Fast is over, I think. सामने बच्चे आए थे, बच्चे हो गया स्टूडेंट प्रभुता। So you might be in the university. Now we have to get to different. That's the he was complaining about territorial. He's also from like this. Very sick. Pondicherry. One guy. So she is from Pondicherry. Pondicherry. Yes, sir. Okay. Enjoy your stay. Sir, I have one question. Sir, how do we get motivated? I mean, sir, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे इतने सारे क्विजेस और ये सब होते रहते हैं, तो बच्चे जब नया क्विज होता है तो बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कभी कभी कि बाद में जब क्विज ख़त्म होने वाला होता है या बाद में उनका उत्साह मतलब काफ़ी कम हो जाता है। सर, आप हमें क्या राय देंगे, हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं कि जो हमारी डिटर्मिनेशन है मतलब वो एकदम मजबूत रहे? सर, तो देखिए, पहली बात है कि लक्ष्य बहुत बड़ा रहता है, फिर छोटे 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 हिस्सों में इसको बांटना चाहिए और जो पाया है उसको जोड़ते जाना चाहिए, जो मिस किया है उसको भूलते जाना चाहिए। यस है, वरना उसी को तो है यार, उस दिन तो जाना था नहीं हुआ, उस दिन तो जाना था नहीं हुआ, तो फिर निराशा आ जाती है। निराशा घुसने नहीं देनी पड़ती। यस सर, थैंक यू Sir, one question. So one question, sir. If I want, my aim is to become a president of India. So Wow. what steps I should follow? Why president? Why not prime minister? So prime minister. So autograph. So I have a question. So many students are interested in space, but don't get Thank you, sir. opportunities to come there. What can you do for introducing more opportunities and chances for them? Well, I'll find out. This time I have started. Sir, one question. Sir, if a person scores 40 and another scores 100 on 100, surely the one who gets 100 would be better. So why is reservation there in our country? Because India is so developed now, it can become a superpower very easily.
Very Three, two, one. नमस्कार। 7 सितंबर 2019 आज की रात मुलाकात चांद के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक और सभी अंतरिक्ष प्रेमी लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनने के लिए तैयार हैं। Welcome to the coverage of soft landing of Chandrayaan-3 on lunar surface. These are the visuals from Mission Operations Complex at ISRO Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, based out of the garden city of Bengaluru, Karnataka. These display screens are showing the countdown. Also the path that lander Vikram will take as we are moments away to see that touchdown happening. Chandrayaan-3 is an Indian lunar mission that aims to improve our understanding of our closest neighbor, the moon. Discoveries that perhaps will contribute to national development and also serve humanity as a whole. These young students have participated in the space quiz and they are here to witness the historic event. At ISRO, as the boundaries of India's capabilities in space continue to expand, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, encourages exploration of space potential and also application of space technologies to help ease of living. Prime Minister, in his Man Ki Baat address, had invited students to participate in space quiz. His appeal had got an overwhelming response, and today, apart from the scientists and other stakeholders, we have students not only of India but also of Bhutan to witness the soft landing of Chandrayaan-2 on the south polar region of the moon. So what makes Chandrayaan-2 special? This is the first space mission to conduct a soft landing on the moon's south polar region. The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all kinds of complex data.
India is at the brink of creating history. Are you ready to witness history tonight? It all starts. A very good morning and welcome from the Mission Operation Complex of Telemetry Tracking and Command Network, an unit of Indian Space Research Organization, ISRO, located in Bangalore in the southern part of India. My name is Radhakrishnan and I have with me my colleague Dr. Alok, who will be bringing to you the live coverage of the Chandrayaan-2 mission in English and Hindi. Today, we are all awaiting anxiously to witness the final phase of critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-2, wherein Indian lunar lander named Vikram will be making the soft landing on the surface of the moon. We are approximately 28 minutes away from this important event. For the viewers, just a quick update on the Chandrayaan-2 mission. Chandrayaan-2 spacecraft is a composite unit consisting of 3 independent modules, named an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan, which is housed inside the lander unit. At the time of launch, all these 3 modules are held together as a single spacecraft called Chandrayaan-2, and the total mass of Chandrayaan-2 at launch was 3,850 kilograms. As you are all aware, launch of Chandrayaan-2 spacecraft took place on 22nd of July on board India's heaviest GSLV Mark III launcher from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. The launcher has successfully placed Chandrayaan-2 into an elliptical transfer orbit around the Earth. Subsequently, Chandrayaan-3 composite module raised its orbit around the Earth by using its rocket propulsion system in preparation to move from the earthbound phase to the lunar transfer phase. Now, if you look at the overall sequence that has happened since the Chandrayaan-2 was inserted into the orbit, the Chandrayaan-2 spacecraft was eventually captured into an orbit around the moon, and later it performed almost 4 lunar-bound maneuvers and lowered its orbit to almost 100 kilometers around the Earth. You may be aware, on 2nd of September, which was 5 days ago from where we are today, the orbiter and the lander module were separated from each other. And the very next day, after the orbiter and lander module got separated, and the lander Vikram module performed 2 deboost operations just to move the orbit from an orbit of 100 by 100 kilometers to an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers around the moon. So as on date, where we are almost 26 minutes away from the launch, and the orbiter module is rotating at an orbit of around 100 kilometers around the moon, and we have the Vikram lander module, which is moving in an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers. And since the launch of Chandrayaan-2 on 22nd July, today is the 40th day when landing is expected to take place. So right now we are around 26 minutes away from the start of the most important and crucial powered descent operations. And once this powered descent maneuver is initiated, it's expected to take roughly around 15 minutes for the lander Vikram to make a soft landing on the surface of the moon. नमस्ते, सुप्रभात और आने वाला दिन शुभ हो। इसी संदेश के साथ मैं आलोक श्रीवास्तव अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक साथी श्री राधाकृष्णन जी के साथ आप सभी देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस समय इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक के मिशन कॉम्प्लेक्स से इस बहुचर्चित क्षण का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं। उपलब्धियों के भारतीय आकाश का एक और दैदीप्यमान सितारा चंद्रयान-2 के रूप में परिणति के शिखर पर पहुंच चुका है, जिसमें चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम और उसके अंदर संयोजित रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2 क्रैटरों मैग्नीज सी और सिम्पेलिस एन के बीच मुख्य संभावित अवतरण क्षेत्र SLS 54 PLS1 जो 70.90267 साउथ अक्षांश या लैटिट्यूड
और 22.7811 ईस्ट पूर्व देशांतर या लॉन्जिट्यूड के बीच उतरकर आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अक्षांश और देशांतर पर उतरने के लिए लगभग 84 मिनट पहले ही पूर्व निर्धारित निर्देशांकों 70.89992 साउथ अक्षांश और 22.7811 पूर्वांतर देशांतर को लैंडर के कंप्यूटर को भेज दिया गया है। किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते अगर ये संभव न हो सका तो इसरो ने इसके लिए दूसरा विकल्प भी तैयार रखा है, जो ALS-0, ALS-1 जो 67.74915 साउथ अक्षांश और 18.46947 वेस्ट देशांतर लॉन्जिट्यूड का चयन कर लिया गया है। आज के दिन तक पहुंचने से पहले चंद्रयान-2 की 48 दिनों की ये लंबी सुनियोजित यात्रा चुनौतियों, कल्पनाओं और यथार्थ की गणनाओं से भरी हुई थी और आज ये यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। इस संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत अगर सार संक्षेप में कहें तो केवल इतना कि एक तरफ चुनौतियों की कमी नहीं थी तो दूसरी तरफ चंद्रयान-2 के सृजनकर्ताओं के आत्मविश्वास और तकनीकी नेतृत्व में भी कभी कोई कमी नहीं आई। तभी आज भारतीय वैज्ञानिकों और उनका ये अभियान हर कसौटियों पर खरा उतरा है। तभी ये अभियान तकनीकी और एक लंबे इंतज़ार के बाद आज वो घड़ी आ ही गई जब हम अपने इस अभियान को पूरा करने के साथ ही एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। किसी भी अंतरिक्ष विज्ञान समृद्ध राष्ट्र के लिए वो दिन बहुत मायने रखता है जब वो शेष विश्व की तकनीकी और विज्ञान के उन्नत राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर हो और तैयार हो। गर्व और उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर अग्रसर होने की चाह जैसी भावनाओं का मिला जुला प्रवाह आज चंद्रयान-2 के साथ हर भारतीय के दिल में जागृत है। इस समय आप मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं। बड़ी बेसब्री से हर भारतीय वैज्ञानिक आंकड़ों पर गहन नज़र बनाए हुए है। हर आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं। The countdown is at minus 22 minutes, 2 seconds to go. After 22 minutes, you will be witnessing the descent, powered descent of the Vikram lander module. As I just mentioned, the Vikram lander module is presently orbiting in an orbit of 30 kilometers peri-Lune, which is the lowest altitude from the surface of the moon, and the Apollune, which is the highest point of the orbit from the surface of moon, is around 100 kilometers. And once the descent operation starts, we expect to take roughly around 15 minutes. And some of the important events during the descent phase, which we'll be covering in the subsequent point as we go closer to this particular activity. But before we do that, just to get a update on the orbiter module, which has been orbiting in an orbit of around 100 kilometers. As you are all aware, the total mass of orbiter module is 2,369 kilograms. At launch, we had the composite module of orbiter and the Vikram lander, which was 3,850. So the orbital module, now that it has got separated from the Vikram lander, has a mass of almost 2,370 kilograms. And out of this total mass, the orbiter, the fuel the orbiter carried was almost 1,683 kilograms. So eventually, if you look at the capability of the orbiter, almost 70% of its mass is the fuel. And the primary reason for requirement of such a large quantity of fuel is basically to raise the orbit from the Earth to the moon and then lower it down very close to the moon. As I already mentioned, when the spacecraft was injected in an orbit of around 39,000 kilometers around the Earth, eventually the orbit using the propulsion system of the orbiter was raised to 400,000 plus kilometers to get captured in the sphere of influence of the moon. So the orbiter model has a single engine which has performed nearly 10 orbital raising and lowering maneuvers,
and in the process, if you look at it, is almost operated for nearly 10,000 plus seconds, which is quite a substantial time as far as the number of times and the duration for which the thruster was fired. So orbiter, in addition to all the technological elements and the challenges, has 8 scientific payloads on board, and which are primarily meant for several scientific purposes, namely carrying out the 3-dimensional mapping of the lunar surface, chemical composition, high resolution imaging of the landing site, mapping lunar craters in the polar regions, in addition to study of lunar exosphere. So life of the orbiter right now is around 1 year in orbit, as it will be orbiting around 100 kilometers from the surface of the moon, and has, as I mentioned, several scientific measurements. So the countdown is now minus 19 minutes. So on your screen you can see a plot of the time when the Vikram is going to descend from an altitude of almost 30 kilometers. It's going to cover nearly 600 plus kilometers at touchdown, and we are very close to that particular event to happen. As I mentioned, during the powered descent time, it will be several phases over which the orbiter will be brought down to the lunar surface. It's not a single event where we just reduce the velocity and go to a lower altitude. It will be going through several phases of orbital altitude reduction and the velocity reduction, which we will explain as we come closer to this flight event. जी हाँ, इस समय हम लगभग 18 मिनट की दूरी पर, जब विक्रम जो है वो उसका डिसेंड या उसका अवतरण शुरू होगा, अन्वेषण की तरफ बढ़ते हुए भारतीय कदम जो हैं उसी की दिशा में चंद्रयान 2 एक और कड़ी है। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है। वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज ही लिए थे, और यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना अधिक होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र ठंडे क्रेटर्स जो गड्ढे हैं, वहाँ पे प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर BN सुरेश को, डॉक्टर TK एलेक्स, ये 2 महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं, जिन्होंने रॉकेट में और उपग्रहों में विशेष भूमिका निभाई है। आप अंदर का दृश्य देख पा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो इस तरह के कई अंतरिक्ष अभियान भारत भेज चुका है। एस्ट्रोसैट था, मंगल कक्षत्र मिशन था, चंद्रयान 1 था, और इसी तरह के अभियान आने वाले वर्षों में और भी हैं जहां पे इस तरह के अभियान आप देख पाएंगे। चंद्रयान मुख्य रूप से 3 मॉड्यूल से मिलकर बना हुआ है। ऑर्बिटर जो चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के बीच संकेत रिले करेगा। विक्रम लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए अभिकल्पित किया गया है। प्रज्ञान रोवर ये 6 पहियों वाला वाहन है। इसका नाम प्रज्ञान, जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है। ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का संचालन करेगा। पहला भारतीय अभियान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। पहला भारतीय अभियान है जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये आज सब कुछ सही होता है तो चंद्रमा